Hello everyone, I am Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathalite. In this video, we'll continue with exercise 20A from chapter Cylinder, Cone and Sphere. So starting with question number 25, the total surface area of a hollow cylinder which is open from both the sides is 3575 centimeter square. Area of its base ring is 357.5 centimeter square and its height is 14 centimeter. Find the thickness of the cylinder. You are given a hollow cylinder which is open from both the sides. So I'll draw a hollow cylinder open from both the sides. All right. So we are given a hollow cylinder. All right. Now we are given the total surface area, that is 3575 centimeter square. Okay, so ये पूरा hollow cylinder का total surface area दिया हुआ है. So TSA is 3575 centimeter square. You have to write down for hollow cylinder TSA is so and so. Then area of its base ring is given to us. ठीक है, so area of base ring is 357.5 centimeter square and height is 14 centimeter. All this information is given to us. We have to find the thickness of the cylinder, that is capital R minus small r we have to find. Alright, so thickness of cylinder is how much? All right, now let us analyze what all is given to us. Total surface area दिया हुआ है. What is the formula for total surface area? So we'll use that formula, and same thing for area of base ring. What is the formula for area of base ring? We'll use that, we'll equate that, ठीक है, and we'll solve. All right. Now why we are finding area of base ring first? Why we are solving that first? Because that is being used in total surface area. What is the area of base ring? It is pi r square minus r square. ठीक है, that is this part. Area of base ring बोला गया है, सिर्फ base ring बोला गया है, not the top part. ठीक है, so इसका area दिया हुआ है 357.5 centimeter square. इसका formula is nothing but pi capital R square minus small r square. Now if you notice total surface area का formula, तो what is total surface area का formula? It is 2 pi RH plus 2 pi small rh plus 2 pi r square minus r square. तो pi capital R square minus small r square total surface area के formula में आ रहा है. So that is why area of base ring का पहले use करेंगे. ठीक है, so pi r square minus r square is equal to so and so. ये हम लोग लिखेंगे. Okay, so area of base ring is 357.5, therefore pi capital R square minus small r square is 357.5. Okay, now we can use this part over here, ठीक है, in total surface area. So TSA is 3575. So इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं. ठीक है, इट इज 2 pi RH plus 2 pi small rh plus 2 pi capital R square minus small r square. You should be thorough with formulas, only then you will be able to solve these kind of problems. ठीक है, so you should know the formulae. Now this is 3575. okay, now pi r square minus r square का value I know it is 357.5. okay, so I'll let this remain as it is, and इसमें से what all is common? 2 pi and h is common, so I'll take 2 pi and h common and we are left with r plus r over here. okay, plus 2 into pi r square minus r square is what? 357.5. I'll substitute that over here. okay, 3575 is equal to 2 pi and h का values I know, that is why I took it common. ठीक है, so this is 2 into 22/7 into
h is 14 into r plus r, that is unknown, plus 2 into 357.5. 2 into 357.5 will give 715. ठीक है, 7 2s are 14. So we have 3575 is equal to 44 into r plus 715. So we'll shift 715 over here. ठीक है, 3575 minus 715, okay, upon 44, sorry into 2 भी है, into 2 I forgot that, so 88 हो गया. This is equal to 88 r plus r. I'll take 88 over here. ठीक है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा. But first I'll subtract this. On subtracting this we get 2860 upon, this will go in denominator. ठीक है, so r plus r is equal to this. Now we'll solve this. 2 44s are, 2 1s are, 2 4s are, 2 3s are 0. Okay, 2 22s are, 2 7s are 14, 2 15s are 30. Okay, and 11 2s are 11, 6 are 66. ठीक है, तो 5 बचेगा, 5s are 55, 65 upon 2. 65 को 2 से डिवाइड किया, then we'll get 2 3s are 6, 2 2s are 4.5. ठीक है, so r plus r is equal to 32.5. now we'll substitute this over here. How? r square minus r square is of the form a square minus b square. A square minus b square is a plus b, a minus b. So a plus b we already have, a minus b मिल जाएगा. a minus b is what we are supposed to find. ठीक है, so r plus r का value I know, I can easily find r minus r just by substituting in this formula. So you have to write down again, area of base ring is equal to so and so, therefore pi r square minus r square is equal to so and so. So pi r plus r into r minus r is equal to 357.5. r plus r का value I know, it is 32.5. so 357.5 upon pi will become 22 upon 7. ठीक है, 7 न्यूमरेटर में चला जाएगा, and r plus r is 32.5. r minus r is equal to so and so. ठीक है, I've skipped few steps. Next step में you will take pi and r plus r on the other side and then substitute the values. I've directly done the thing. Now we'll multiply both numerator and denominator by 10. ठीक है, so this decimal point will go away. So 3575 into 7 upon 22 into 30, 2.5 into 10, that gives 325. ठीक है, 5 6s are 30, 5 5s are 25, 5 7s are 35, 5 1s are 5, 5 5s are 25. Again we'll divide by 5, 5 13s are 65. ठीक है, and 5 1s are 5, 2 बचेगा, 5 4s are 20 and 5 3s are 15. ठीक है, again this is divisible by 13, 13 1s are 13 and 13 1s are 13, 11 2s are 22. ठीक है, so 7 by 2, that is r minus r. 7 by 2 is nothing but 3.5 centimeters. Okay, so we got the thickness of cylinder, that is 3.5 centimeter. You'll write down the final statement. Thickness of the cylinder is 3.5 centimeters. Okay, let's check the next question. Question number 26. The given figure shows a solid formed of a solid cube of side 40 cm and a solid cylinder of radius 20 cm and height 50 cm attached to the cube as shown. Find the volume and the total surface area of the whole solid. Now you are given one solid that consists of a cylinder and a cube. ठीक है, ये दोनों को मिला के ये पूरा एक solid बन रहा है. Now the cylinder is a solid cylinder completely filled, as well as the cube is a solid cube. ठीक है, that is completely filled, it is not hollow. Okay, so
and you are given the dimensions of both cylinder and cube. So for the solid cube, the side is 40 centimeter, and we know side of a cube, all sides of a cube are equal. ठीक है, तो every side is given to us, that is 40 centimeter. So let us write down what is given for cube. For cube, L is equal to 40 centimeter. All right, and for the cylinder, for solid cylinder, what is given? Solid cube also. ठीक है, यहाँ पे solid cube है. So for solid cube and solid cylinder radius is 20 centimeter and height is 50 centimeter, and both are attached. ठीक है, they are fixed, attached है. Now find the volume and total surface area of the whole solid. ये पूरा सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना है. टोटल सरफेस एरिया में बाद में आते हैं, पहले वॉल्यूम का फाइंड करते हैं. ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब दोनों को ऐड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ दिस होल सॉलिड पता चल जाएगा. दैट इज वेरी इजी. आई नो लेंथ, आई नो रेडियस, आई नो हाइट, तो आई कैन इजिली फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब एज वेल एज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर. सो लेट अस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब एंड सॉलिड सिलेंडर रिस्पेक्टिवली. सो वॉल्यूम ऑफ the solid cube will be L into L into L, that is nothing but 40 into 40 into 40. 4 4s are 16, 16 4s are 64 and 3 zeros है. ठीक है, and centimeter cube है. Volume of solid cylinder, don't use short forms. ठीक है, you have to write full word cylinder. This is pi r square h. pi r square, pi यहाँ पे बोला गया है, take pi as 3.14. So 3.14 into 20 into 20 into 50. Now ये 20 into 50, what will that give? 5 2s are 10 and ये 2 zeros 1000 हो जाएगा. 3.14 into 20 into 1000. ये 2 zeros यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? डेसिमल पॉइंट निकल जाएगा. सो 3140 हो गया, एक और ज़ीरो है. ठीक है, 2 zeros से डेसिमल पॉइंट गया एंड 1 more zero that will be added, okay, into 20. It's very easy. 314 into 20, 4 2s are 8, 2 1s are 2 and 3 2s are 6 and there are 2 zeros. Now this is centimeter cube. We'll add these two volumes. So that is the volume of the solid. So volume of whole solid is equal to 64,000 plus 62,800. ठीक है, so it is 126800 centimeter cube. This is the volume of whole solid. Now we'll come to total surface area of the solid. Coming to total surface area of solid. Now let's say कि ये जो है that is cylinder and this is the cube. This is like a shape of cuboid, but let us consider this as cube. ठीक है, now this is forming the total solid, ऐसे attached है. We have to find the total surface area of this solid. Now total surface area of this solid will not be total surface area of this cylinder plus total surface area of this cube. ठीक है, why? Because if you see, this base is attached to the top part of this cube. ठीक है, it is attached. So what is the outer area? What will be the area? It will be this whole area. ये ठीक है, ये सर्कुलर पार्ट प्लस दिस रिंग पार्ट. ठीक है, राउंड पार्ट प्लस दिस मच एरिया, ओनली दिस आउटर पार्ट. ये सर्कुलर पार्ट कट करके ये टॉप पार्ट आएगा इसका, प्लस ऑल दीज साइड्स. सो हाउ विल यू फाइंड? नाउ what you will do is take total surface area of cylinder plus total surface area of cube and subtract the attached part.
ये बेस पार्ट इज अटैच टू दिस पार्ट, मतलब ये बेस का सर्कुलर पार्ट प्लस इसमें से सर्कुलर पार्ट कट हो रहा है, तो जितना सर्कुलर पार्ट इसमें है उतना ही सर्कुलर पार्ट यहाँ से कट होगा. ओके, सो TSA ऑफ सिलेंडर प्लस TSA ऑफ क्यूब, ठीक है, ये दोनों का टोटल सरफेस एरिया लिया. उसमें से यू विल सब्ट्रैक्ट द बेस ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है, बिकॉज दैट मच एरिया इज फिक्स्ड ओवर हियर, सो दैट इज नॉट कंसिडर्ड. ठीक है, इट इज नॉट ऑक्यूपाइंग आउटर पार्ट का एरिया दैट मच. टोटल सरफेस एरिया मीन्स व्हाट, कितना एरिया बाहर से कवर कर रहा है, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, ये पार्ट तो अटैच हो गया, ये दोनों अटैच पार्ट को हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते. सो दिस पार्ट एंड दैट सर्कुलर पार्ट, सेम सर्कुलर पार्ट ओवर हियर ऑन द दिस स्क्वायर पार्ट. ठीक है, सो यू सब्ट्रैक्ट pi r square from this. Now we have to subtract pi r square from here also. ठीक है, the attached part you are subtracting, so you are subtracting pi r square once more. This will give you the total surface area of this whole solid. So total surface area of whole solid will be total surface area of cylinder. पूरा surface area लिया, लेकिन उसमें से क्या subtract कर दिया, ये बेस सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर. एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब पर उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये जो राउंड पार्ट यहाँ पे अटैच्ड है, सो उतना ही एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो आई सब्ट्रैक्टेड दैट मच पार्ट फ्रॉम हियर, दैट इज पाई आर स्क्वायर. सो -2 पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा. ओके, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज व्हाट, इट इज 2 पाई आर h प्लस आर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6l स्क्वायर. ठीक है, वन साइड का एरिया विल बी l स्क्वायर, 6 साइड है तो 6l स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 पाई आर स्क्वायर. नाउ इफ यू नोटिस, इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. सो इफ आई ओपन द ब्रैकेट्स 2 पाई आर स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड. यू हैव टू राइट ओवर हियर. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ whole solid is equal to this. So 2 pi r square, 2 pi r h sorry, plus 2 pi r square plus 6l square minus 2 pi r square. If you don't want to cancel 2 pi r square तो directly solve करके substitute करके भी you can, ठीक है, get the answer. So you can solve it normally भी, 2 pi r h plus r का वैल्यू फाइंड किया, इसका वैल्यू फाइंड किया, then you subtract 2 pi r square. Or you can follow this method where 2 pi r square is getting cancelled. The only thing is कि calculations थोड़ा कम हो जाएगा. Okay, so 2 into 3.14 into r is how much, 20, h is 50 plus 6l square है, so 6 into 40 square है. Now 2 into 3.14, let us multiply this first. 5 2s are 10 and 0 0 है, plus 6 into 40 square, 4 4s are 16 and 0 डबल हो जाएगा. ठीक है, now we'll take zeros over here. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 314 हो जाएगा. ये 2 zeros डेसिमल निकाल देगा and 1 0 is added over here, plus 6 into 1600. ठीक है, this will give 6280 plus 9600, that gives 0.1580 centimeter square. That is the total surface area of whole solid. Okay, let's check the next question. Question number 27. Two right circular solid cylinders have radii in the ratio 3:5 and the heights in the ratio 2:3. Find the ratio between their first part curved surface areas and second part volumes. You are given two right circular cylinders and you are not given the radius and height of either cylinders. ठीक है, you are just given the ratio of the heights and radii.
So let us write down the given information first. There are 2 cylinders, so let us number the cylinder, cylinder 1 and cylinder 2. ठीक है, so there are 2 right circular solid cylinders. ठीक है, for cylinder 1, let the radius and height be R1 and H1 respectively, and for cylinder 2, let the radius and height be R2 and H2 respectively. ठीक है, you have to write full statement. Now you are given the ratio of radii is 3:5, that is R1 upon R2 is equal to 3/5, and heights, so H1 upon H2 is 2/3. Find the ratio between the CSAs and volumes. So CSA for cylinder 1 क्या होगा? What is the formula for CSA? It is 2 pi RH. ठीक है, so for cylinder 1 R1 H1 हो जाएगा. Okay, and CSA for cylinder 2 is 2 pi R2 and H2. ठीक है, now we have to find CSA1 upon CSA2. ठीक है, so CSA of cylinder 1 upon CSA of cylinder 2 is 2 pi R1 H1 upon 2 pi R2 H2. 2 pi will get cancelled. We are left with CSA R1 upon R2 into H1 upon H2. This is how I am writing. Okay, R1 upon R2 is 3/5, H1 upon H2 is 2/3. ठीक है, 3 gets cancelled. We are left with 2/5. So CSA का ratio is 2:5. Okay, this is the first part. This was the first part. ठीक है, coming to the second part, that is volumes. Now coming to the second part, volumes, we know it is pi r square h. So volume of cylinder 1 is pi r1 square h1, and volume of cylinder 2 is pi r2 square h2. Again we'll take ratios. ठीक है, तो volume of cylinder 1 upon volume of cylinder 2 is pi r1 square h1 upon pi r2 square h2. Pi gets cancelled. We are left with r1 square h1 upon r2 square h2. What we'll do, take RR, okay, and HH अलग से. So r1 square upon r2 square into h1 upon h2. दोनों में स्क्वायर कॉमन है, so r1 upon r2 square into h1 upon h2, that is 2/3. r1 upon r2 is 3/5. So 3 into 3. ठीक है, ये हो जाएगा 3 into 3 upon 5 into 5 into 2/3. ठीक है, r1 upon r2 आई कैन ऑल्सो, मतलब मैंने क्या किया, स्क्वायर ले लिया. ठीक है, स्क्वायर कॉमन ले लिया. r1 upon r2 स्क्वायर इंटू h1 upon h2. r1 upon r2 इज 3/5, स्क्वायर है. ठीक है, तो
3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 अपॉन 5, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, ओके. और यू कैन डायरेक्टली राइट 9 अपॉन 25 इंटू 2 अपॉन 3, it gets cancelled. So we are left with 6 upon 25. So ratio of volume of cylinder 1 upon cylinder 2 is 6:25. So you'll write it like this, ठीक है. It's very easy. Proceeding to next question. Question number 28. A closed cylindrical tank made of thin iron sheet has diameter equal to 8.4 meter and height equal to 5.4 meter. How much metal sheet to the nearest meter square is used in making this tank if 1/15 of this sheet actually used was wasted in making the tank? Now, how much metal sheet is used in making a tank? एक cylindrical tank है, ठीक है, normal cylindrical tank. Now it is made using a normal metal sheet, iron sheet, ठीक है. क्लोज्ड है, सो टॉप एंड बॉटम सर्फेसेस एंड सर्कुलर सर्फेस है, ठीक है. सो कर्व्ड पार्ट रहेगा एज वेल एज दीज टू सर्कल्स. नाउ शीट से बनाया गया है, सो ऑब्वियसली यू आर नॉट कंसिडरिंग द वॉल्यूम, यू आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ द शीट यूज्ड, ओके. सो ये केस में हाउ मच एरिया ऑफ द शीट इज यूज्ड वी हैव सपोज टू नो, बिकॉज हाउ मच मेटल शीट इज यूज्ड टू द नियरेस्ट मीटर स्क्वायर. यहाँ पे हिंट भी दिया है, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया फाइंड करना है. हाउ मच एरिया? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है. क्लोज्ड है, क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है, सो क्लोज टैंक के लिए टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है. वी नो एच, वी नो आर, ठीक है. वील गेट आर फ्रॉम द डायमीटर, सो वी कैन ईजिली फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, ओके. सो फर्स्ट लेट अस फाइंड द एरिया एंड देन वील गेट टू द सेकेंड पार्ट, ठीक है, जहाँ पे हम लोग को पूछा गया है 1/15 ऑफ द शीट एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक. सो वील कम टू दैट पार्ट लेटर. फर्स्ट लेट अस फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. सो फॉर क्लोज्ड cylindrical tank we are given diameter and height, दोनों मीटर्स में है, ठीक है. नाउ वील फाइंड आर. आर क्या हो जाएगा? d/2 दैट इज 8.4/2 which is 4.2 meters. Now we need to find the area. So total surface area of cylindrical tank, closed cylindrical tank, ठीक है, will be 2 pi r h plus r. 2 into 22/7 into r is 4.2 into h is 5.4 plus r is 4.2. दिस विल गेट कैंसल्ड, ठीक है. 7 6 42 तो 0.6 हो जाएगा, ठीक है. दिस इज 44 इंटू 0.6 इंटू 5.4 प्लस 4.2, सो दिस विल बिकम 9.6. नाउ दिस इज द टोटल सरफेस एरिया दैट वी गॉट, ठीक है. नाउ व्हाट आर यू आस्क्ड? हाउ मच मेटल शीट इज यूज्ड टू द नियरेस्ट मीटर स्क्वायर, ओके, इन मेकिंग दिस टैंक इफ 1/15 of the sheet actually used was wasted in making the tank. 1/15 is wasted, मतलब ये तो यूज किया हुआ है, 1/15 इसका वेस्ट हुआ है. सो ये जो एरिया है उसका 1/15 वेस्ट हुआ है. सो 1/15 of the sheet used is wasted. How much amount of sheet is used? This area of sheet is used, ठीक है. So that means 1/15 of this area total surface area, ठीक है. So 1/15 of total surface area क्या है? 44 इंटू 0.6 इंटू 9.6, इतना वेस्ट हुआ है. सो ये वाला पार्ट भी हम लोग को ऐड करना है. 1/15 वेस्टेड पार्ट, दिस इज द वेस्टेड पार्ट,
plus the part that is used. So that will give you the amount of sheet that is used. I'll explain again. Total surface area find किया to find how much area of sheet is used. ठीक है, total surface area is this much. I have not multiplied because यहाँ पे cancellation होगा. 1/15 of the sheet is wasted. 1/15 of how much? 1/15 of the sheet used. कितना शीट यूज किया है? ये एरिया वाला शीट यूज किया है. ठीक है, सो 1/15 ऑफ दिस, सो 1/15 ऑफ टोटल सर्फेस एरिया, दैट इज दिस. ठीक है, वील फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. सो दिस एरिया प्लस द वेस्टेड शीट will give you the total amount of sheet that was used. Okay, so let us find इसका value plus इसका value. So 44 into 0.6 into 9.6. So total surface area is 253.44 meter square and 15th of TSA क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैंसलेशन होगा. ठीक है, 3 5 ज़ा 3 0.2 ज़ा. ठीक है, आगे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है. सो वील मल्टीप्लाई दिस एंड डिवाइड बाई 5. तो ये हो जाएगा 16.896 मीटर स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द वेस्टेड शीट. सो द यूज्ड शीट प्लस वेस्टेड शीट. सो area of sheet, total area of sheet is used sheet plus wasted sheet. ठीक है, used sheet कितना है? 253.44 and wasted sheet that is 16.896. This will give 270.336. So we'll round it off. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 270.34 meter square. So this is the approximate area that is used. So this much amount of sheet, this much area of sheet is used for making this closed cylindrical tank.